आज विश्व बंधुत्व दिवस है। 11 सप्टेम्बर 1893 में स्वामी विवेकानंदे विश्व धर्म परिषद शिकागोनी अंदर एक ऐतिहासिक उद्बोधन कर्યું હતું। स्वामी विवेकानंदे देश અને દુનિયાની અંદર બંધુત્વનો સંદેશ આપ્યો હતો। हिंदू शाश्वत संस्कृति विषे दुनियाने माहितगार करी हती। ए दिवस विश्व बंधुत्व दिवसना रूपमां मनाववामां आवे छे। रामकृष्ण मिशन संस्था आ दिवसने समग्र देश अने दुनियानी अंदर उजवी रही है। स्वामी विवेकानंदे कह्युं हतुं के मने 100 युवा नचिकेता मळे जे राष्ट्र पुनरुद्धार माटे अमने उपयोगी थई शके। आजे पण आपणा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदीजीए विकसित भारतनी संकल्पना करी छे अने विकसित भारत माटे देशना युवानोने राष्ट्र प्रत्ये कर्तव्यनुं निर्वहन करवानुं आह्वान कर्युं छे। आज चोक्कस रीते देशना युवा राष्ट्रने समर्पित, राष्ट्रना विकासने समर्पित अने विकसित भारतनी संकल्पनाने चरितार्थ करवा माटे अग्रेसर थई रह्या छे। स्टार्टअपना माध्यमथी, स्टेन्डअपना माध्यमथी, स्किलिंगना माध्यमथी युवाओ पोते विकसी रह्या छे અને રાષ્ટ્રના વિકાસમાં પોતાનું દાયિત્વ અદા કરી રહ્યા છે। નેપાળમાં આપણા ઘણા ગુજરાતી અને ભારતીય યાત્રાળુઓ પણ વર્તમાન સ્થિતિમાં ફસાયા છે। આપણું વિદેશ મંત્રાલય, આપણું વિદેશ દૂતાલય જે કાઠમંડુમાં છે એ પણ આપણા બધા શ્રદ્ધાળુઓ ભારતીયો એ સુખરૂપ ભારતની અંદર પરત પહોંચે એના માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે।